Ladies and gentlemen, good day and welcome to Q1 FY24 earnings conference call of Praveg Limited, hosted by Kirin Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Gopal Chandak from Kirin Advisors. Thank you, and over to you. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, I welcome you all to Praveg Limited Q1 FY24 Concall. From the management side, we have Mr. Vishnu Patel, Chairman, and Ms. Bijal Parekh, Finance Director. Now I hand over call to Ms. Bijal Parekh. Over to you, ma'am. Okay, thank you. Warm welcome to all our investors. We reported financial performance for the first quarter of financial year 2024. I am sure you all had an opportunity to go through the same. We reported total income of 12.5 crores. In quarter 1 of financial year 23-24, the resource business has performed better than the same period last year, which was preliminary due to additional revenues for our Varanasi project, which was open for April 2023 in quarter 1, and Daman Resource, which is opened on May 15, 2023. That grew the company's hospitality revenues by 25.4% over the comparable period last year. At the same time, the company's event and exhibitions business was down significantly from the comparable period of last year due to lower institutional activity in the events and exhibitions space so far in financial year 23-24 as compared to the financial year 22-23. Institutional events and exhibitions are driven by industry and government promoted events. The company has reoriented a large part of its event and exhibition business to create additional demand for its own resource properties to deliver higher growth in the hospitality business in the current year. The results for quarter 1 financial year 2024 is a good indicator of the company's margin and cash generating capacity. The company has a robust EBITDA margin of 39.4% and EBITDA of 4.95 crores. The establishment of new resource in the previous and the current financial year has led to an increase in depreciation and amortization charges by over 234% on a year-on-year basis due to large capex incurred on new resource properties in quarter 1 of 24. The profit for the quarter came to 1.17 crores. I must give you all an insight about why there is a huge rise in expenses. We are investing heavily for future growth. This year is earmarked for heavy investment in the hospitality business, where we have vigorously allocated our resources in the development of 15 resorts within a year. This is a strategic move to achieve our broader vision. The company has already opened new resorts in Daman and Diu and has received a letter of allotment from Ayodhya. Several other properties are in the pipeline, and the company hopes to add a total of 15 new resorts in financial year 2023-24. As the company focuses in executing and activating the additional resorts, its events and exhibitions business is expected to have a lower growth rate in quarter 2 of financial 24 and show a pickup from quarter 3 of financial year 24. It is also a shift from an entrepreneurship to a service provider company. Thus, there is a need for a professional management. We have onboarded new directors as well as 50 plus senior and mid-level management team across all departments, including our project department, marketing, sales, accounts, HR, online digital marketing platform as an investment for the future. These endeavors are projected to significantly contribute to our performance in the current year. Now, let me give you a brief snapshot of our upcoming projects. In quarter 1 financial year 2024, we have 4 resorts operating, in which 2 are seasonal and 2 are for entire year operational.
In quarter 2 financial year 2024, we have started 2 new resorts, which leads to 4 operational resorts for the year, and 2 will be seasonal. In quarter 3 financial year 24, we expect 6 more resorts to be operational, which would lead us to 10 resorts operational for the entire year and 2 as seasonal. By the year end, it is expected to have 15 resorts operational for the entire year and 2 resorts on a seasonal basis. So the growth is enormous and the transition is expected to pave a way for the future growth. We are a leading company in providing unique hospitality services, and this will keep our leadership position strong. I am optimistic with our strategic move and believe our future prospects are very bright. At the same time, I am grateful to each one of you for keeping faith in our company and being a part of our transitional phase. I am quite confident that this transition would reward all of us in a great way. With this, I open the floor for questions and answers. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Speaker के अच्छा okay. We have our first question from the line of Avinash G from Perfect Market Securities. Please go ahead. Yeah, Vishnu bhai, this is Avinash. Just wanted to understand that in the current financial year, that is by December, how many properties will be operationalized? If you could give us some idea. And second quarter, third quarter में अगर आप हमको property wise बताएंगे कि कौन सी properties commission होगी और जो hotel business जो हमने नया hotel खरीदा है सिंधुबर्ग रोड के यहाँ पे, if you can share some data points on that. What is the kind of outlook for the hotel business, and can we assume that from October this business will contribute to the Praveg financials in FY24 also? Yeah. First of all, thanks to Kiran Advisor for nicely coordinating these Concall events. Also, welcome to all my esteemed investors as well as analysts from financial market. Just as asked by the Avinash bhai, I would like to elaborate in details all about our hospitality upcoming projects and existing projects. First of all, you may be surprised that जो पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट है इसमें EBITDA मार्जिन अच्छा है, सब अच्छा है, बट प्रॉफिट थोड़ा क्यों डेविएट हुआ है. तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रवेग. प्रवेग का जो मेन फोकस इवेंट एग्जीबिशन और हॉस्पिटैलिटी दोनों का एक बैलेंस था, उसकी जगह अभी ज़्यादा बिजनेस फीचर हम हॉस्पिटैलिटी और एक्सपीरियंशियल हॉस्पिटैलिटी पे लीड कर रहे हैं कंपनी को. इसके लिए काफ़ी मैनेजमेंट एज वेल एज मैन पावर एज वेल एज स्ट्रेटेजिक टाई अप्स, उसके लिए काफ़ी कुछ डेवलपमेंट चल रहा है. एंड दिस क्वार्टर वी हैव टू टेक पेन टू मेक प्रवेग्स ग्रोथ एंड गेन. तो मैं आपको डिटेल्स में बात करना चाहूँगा उसके लिए. फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वी हैव ओनली वन रिसोर्ट्स विच वाज ऑपरेशनल, दैट वाज इन केवड़िया एज यू नो. सेकंड रिसोर्ट्स वी हैव इनिग्रेटेड इन दमन वन साइट. 15 मई को स्टार्ट हुआ और 15 मई से आज तक का उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी खुश कर देने वाला है. इट्स बियॉन्ड 75% ऑक्यूपेंसी इन लास्ट 3 months. Even there is a slack year for tourism season. Always first and second quarter is a slack season to some places, and so average response रहता है हमारे experience के हिसाब से. Even the response is great, and we are हमारी टीम काफ़ी उसके result और उसके सब outcome से खुश है.
मैं आपको क्वार्टर 2 की बात बताना चाहूँगा। क्वार्टर 2 के अंदर हमने 2 रिसोर्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। वो है दीव में है और दूसरा दमन 2 में है, जिसको हम जंपर बीच बोलते हैं। तो 2 जगह पे है। मैं ऐसा चाहूँगा कि हमारे जो भी कॉन कॉल पे लोग हैं वो खुद फील करें वहाँ जाके, तो उनको भी एक्सपीरियंस पता चलेगा कि कैसा प्रोजेक्ट का जो रिसोर्ट्स के लोकेशन और एक्सपीरियंशियल हॉस्पिटैलिटी हम किसको बोलते हैं। उसके अलावा की बात करूँ तो थर्ड क्वार्टर के अंदर हमारा काफ़ी अभी एज अर्लियर ऑल्सो टोल्ड टू यू कि हमारा जो रिसोर्ट है उसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो शॉर्टेस्ट है। उसका एक बेनमून नमूना है कि हम सेकंड क्वार्टर में 2 रिसोर्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसका काम मार्च फरवरी में स्टार्ट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि 120 दिन 150 दिन के अंदर हमने सारी 4 रिसोर्ट्स लॉन्च, 3 रिसोर्ट लॉन्च कर दिए हैं और सेम जर्नी इज कंटिन्यूइंग। तो अभी क्वार्टर 3 के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि हम एक तो हमारी फ्लैगशिप प्रॉपर्टी है सिंधु भवन रोड पे, जो प्रवेग ने लीज लॉन्ग टर्म लीज बेसिस पे एक्वायर की है। तो वो हम करने इनॉग्रेट अक्टूबर मंथ में करने जा रहे हैं। सेम वे हमारा दीव 2 जो सबसे फेमस बीच है इंडिया का, गोगला बीच, तो उसके ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में। कुछ दीव का वो प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा। वी आर इन वेरी कंक्लूजन स्टेज टू मेक इट फाइनल फॉर द गेस्ट, रेडी फॉर गेस्ट। तो वो एक प्रॉपर्टी है जो हमारे को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिंधु भवन रोड प्रॉपर्टी which is the very prime location property of the Gujarat. It is the one of the famous road of Ahmedabad. मेरे को नॉइस आ रहा है कहाँ से? Mr. Avinash, can you please mute your line? Yeah. Yes, you can go ahead, sir. Yeah. So the Gogla beach is prime property, not in terms of location. Our creativity is also somewhat different than Divs and Daman other resorts. So our guests can feel thrill and they feel some experience, extra experience from that property also. तो वो एक प्रॉपर्टी है। और मैं आपको सिंधु भवन रोड की प्रॉपर्टी के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। इट इज़ नॉट जस्ट होटल्स टू where we compare with the rooms capacity. It's a 3 floor. Each floor is around 15,000 square feet carpet. Banquet hall. In Ahmedabad, there is a lot of demand for banquets, for wedding, one social gathering, one corporate gathering. तो उसके हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने डिज़ाइन किए हुए बैंक्वेट्स है, जिसकी रेवेन्यू रूम रेवेन्यू से भी ज़्यादा आने वाली है। तो उसके लिए हमारा मार्केटिंग टीम में काफ़ी हैप्पी है और काफ़ी कुछ बुकिंग भी एडवांस में लेने चालू कर दिए हैं, बिकॉज वी आर इनॉग्रेटेड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। तो वो दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं धौलावीरा है। धौलावीरा के अंदर कच्छ में जैसे कि हमारी वाइट रन रिसोर्ट है वो सीजनल है। वी ऑल्सो हैव सम स्ट्रेटेजी टू अलाइन अवर सीजनल प्रॉपर्टी विथ नियर बाय गुड स्पॉट। तो उससे वो सीजनल प्रॉपर्टी का गेस्ट अगर वहाँ जाना चाहता है और उसकी ड्यूरिंग देयर अदर देन नॉन सीजन में भी इंक्वायरी आती है, तो उसको दूसरे नज़दीक के हमारे रिसोर्ट्स में शिफ्ट कर दे। वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने वो रिसोर्ट एक्वायर किया है, लैंड एक्वायर किया। दिस इज ऑन आवर ओन प्रॉपर्टी ऑफ द प्रवेग। तो वो रिसोर्ट भी हम नवंबर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कच्छ की बड़ी सीजन आ रही है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने का बिजनेस, पूरे साल जितना बिजनेस होता है। तो वो बिजनेस भी, एक्स्ट्रा बिजनेस हम वहाँ भी करेंगे। वो है धौलावीरा। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हेरिटेज साइट्स है, वही जो पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, सेम धौलावीरा स्पॉट है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। उसका फायदा 2 है। वहाँ वाइट रन रिसोर्ट भी है, एग्जैक्टली द सेम विच इन डोडो। डोडो मीन्स वाइट रन रिसोर्ट अभी जो चला रहा है सीजनल। वहाँ जो सफेद रन है, मतलब कि समंदर से बनता है, सेम चीज इधर भी है। तो पूरे साल हमारे गेस्ट वहाँ एंजॉय कर सकेंगे। सो वी हैव कैपेसिटी टू मेक 100 rooms over there, but
बीइंग प्रूडेंट हमारी जो ऑक्यूपेंसी अच्छी मिले उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देखेंगे तो 30 रूम्स हम बनाने जा रहे हैं, तो वो रूम भी हमारा, वो प्रॉपर्टी भी स्टार्ट हो जाएगा। वाराणसी ऑल्सो इट्स डिपेंड अपॉन हाउ होली रिवर गंगा बिकम ड्राई टू पार्ट ऑफ उसके जो किनारा होता है वहाँ एकदम सैंड वाला ड्राई एरिया बनता है जो नॉर्मली सितंबर महीने में बनता है। और ये लोकेशन का जो स्ट्रेटेजिकल चीज ये है कि वो कब चालू हो उसका पूरा डिपेंडेंस ये वाटर ड्राइनेस पे है। तो नॉर्मली एक्सपीरियंस ऐसा है सितंबर महीने में ड्राई होना चालू हो जाती है। तो अगर प्रोडक्शन टीम आर रेडी विथ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डेवलप दैट, तो वो भी हम स्टार्ट करके एटलीस्ट नवंबर में हमारा बिजनेस कैटर कर पाए उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। तो हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 5 महीने का अच्छा सीजन है। लास्ट ईयर भी 2-2.5 महीने में भी अच्छा बिजनेस हमारे को मिला था, इवन दो देयर वाज द लेट इनॉग्रेशन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो फिर भी इस बार ये फॉर्मेलिटी ये भी हम जल्दी करेंगे। तो वो एक वाराणसी का रिसोर्ट है जो चौथा रिसोर्ट है। उसके अलावा राम मंदिर जो हमारे को प्रॉपर अवार्ड हुआ है 10+5 ईयर्स 15 साल के लिए, तो उसको भी हम इनॉग्रेट करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन वो लास्ट क्वार्टर के लास्ट वीक तक हो जाएगा ऐसा टीम हमारी काम कर रही है वो रिसोर्ट पे। और 6ठा रिसोर्ट है वेलावदर जो भावनगर में है, बक सेंचुरी आपको बता रहा, वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्ट है। सिविल का और हमारी जो नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी है उसका बेनमून नमूना है। तो वो भी हम 3rd क्वार्टर के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल 6 रिसोर्ट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3rd क्वार्टर में। सो इट विल बी और जो 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर है वो बिजनेस के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि डबल बिजनेस होता है। रिसोर्ट वाइज में बात करता हूँ, अगर एक रिसोर्ट है तो उसका एक ही रिसोर्ट कंटिन्यू है तो उसका डबल बिजनेस मेरे को वो क्वार्टर में मिलता है, डेटा डबल। इट्स डिपेंड हाउ द स्पेक्ट्रम ऑफ टूरिस्ट मूविंग अप। तो वो भी क्वार्टर 3 में हम जो 6 रिसोर्ट्स प्लस एग्जिस्टिंग के 3 रिसोर्ट 9 रिसोर्ट्स will deliver us good result and response from our tourist as well as publicity point of view. Same day quarter 4 we are planning to inaugurate Adalaj property which is also heritage sites, Adalaj stepwell, very famous stepwell। उसके एडजॉइनिंग हमने आपको पहले भी एक बार ब्रीफ किया हुआ है। 30,000 square meter is awarded with long term lease of 30 years and Praveg is planning for social events or various kind of theme park, theme based some part of creativity। तो अडालज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उदयपुर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वार्टर 4 में, जवाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके साथ एक प्रॉपर्टी हमारा जवाई और एक रणथंबोर है। वी आर वेटिंग फॉर सम क्लियरेंस फॉर दैट प्रॉपर्टी। अगर ये पॉसिबल होगा तो वो भी प्रॉपर्टी हमारा प्रयास है कि 3rd क्वार्टर में वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के 4 प्रॉपर्टी क्वार्टर 4 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। Thank you. We'll take our next question from the line of Nalin Shah from NVS Brokerage. Please go ahead. Mr. Nalin Shah? Mr. Nalin Shah? Yeah, speaking. Please, Thank you, go ahead madam. with your question. Thank you. Let me say this is one of the very, very unique concept and I think unique kind of a business model which is coming up. So I must congratulate Vishnu Bhai and his team who really, visualize this kind of a potential in the country. Now, since, as we said that we are transforming from product, company to what we call the service company. So whatever is the yardstick applicable to companies, we would like if you can highlight in some of the ideas applicable in case of a service company, in the sense that you have told us the number of this thing will be operational so many resorts, but we would like to know what is the
total number of rooms currently we are operating? What will be the total number of rooms, by the time, the year ends? What kind of cost per creation of this, rooms is the, cost of room? And what is the kind of a per day or, and say per month kind of a revenue which we are expecting from them, to just have a broad idea? Secondly, I would also like to know what is the, because it is very difficult to predict and project anything in terms of revenue, because there is a room rent, there is a food and beverages, so there are a lot of, components are there. So if you can give us some idea about the current year, what is the kind of top line and bottom line we are planning to achieve, and what is the at least 3 years roadmap on this, so that we have some clear idea about the company. Yeah, great, Nalin bhai, thanks for your question. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मैं आपको थैंक यू जी. हाँ जी, डिटेल में ब्रीफ करना चाहूंगा. हाँ जी. टोटल में हमारा जो रिसोर्ट का जो रूम है उसके हिसाब से आपको बताऊं तो 2 सीजनल रिसोर्ट है, जो 140 और 76 रूम 2 रिसोर्ट्स में है. टोटल 216 रूम है, वो सिर्फ एंड सिर्फ 3rd and 4th क्वार्टर में एप्लीकेबल होती है. अगर 216 को भी मिला लूं तो क्वार्टर 1 के अंदर टोटल 233 एंड 216 कुल मिला के 449 रूम थे. Out of that, only 233 room was operational, just for your knowledge. Okay. So, because of we are transforming in terms of management system, hierarchy system. Correct. Each individual is from background of professional of the respective area. Hospitality expert, director of IT, director of finance, director of marketing. So that kind of people we are entering into since last 6 to 9 months. We are transforming to individual management to professional management driven company. So we are working on that direction. Very good. मैं आपको बताऊं कि 233 रूम्स हमारे क्वार्टर 1 के अंदर स्टार्ट थे, और वी गेट एवरेज ऑक्यूपेंसी नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर में. मेरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि फर्स्ट क्वार्टर हमारा 25% से 35% के आसपास ऑक्यूपेंसी फर्स्ट सेकंड क्वार्टरों में होती है, और थर्ड क्वार्टर के अंदर 60% 70% तक पहुंचती है, और फोर्थ क्वार्टर के अंदर अगेन 60%. थोड़ा डाउन टर्न होता है, डाउन टर्न इन थर्ड से फोर्थ क्वार्टर में. ये ओवरऑल ग्राफ में आपको टूरिज्म इंडस्ट्रीज का बता रहा हूँ, जिसमें प्रवेग भी पार्ट है. करेक्ट. वो बात है. दूसरी मैं बात बताऊं तो टेंट सिटी केवड़िया का हमारा एनुअल रूम रेट मैं एवरेज अप्रोक्सीमेटली बोलूंगा 8,500 से 9,000 रुपया है, जो नॉर्मली क्वार्टर 1, 2, 3, 4 में लागू होता है. सेम वे हमारा जो नॉर्मली लॉन्चिंग साइट होता है, नलिन भाई आप जानते हैं कि लॉन्चिंग होता है तो गेस्ट को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए हम नॉर्मल ARR शुरुआत में थोड़ा कम रखते हैं. धीरे धीरे रिस्पॉन्स को देखते हुए हम स्ट्रेटेजिकल बुकिंग लेते हैं. करेक्ट को मिलाते हुए हमारा ये जो दमन है वहाँ हमने 8,000 से 9,000 के बीच में ARR लेना स्टार्ट किया है, which will go up to 12,000, 30,000 in third quarter, fourth quarter. So it's a strategical balance and to achieve some numbers for the company. तो ये है. अभी जो रिसोर्ट्स बनने जा रहे हैं उसके हिसाब से at the end of fourth quarter there will be 800 plus rooms by the company which will be in operation. In terms of creativity, we have unique kind of proposition. We normally match the place location with our creativity. मैं आपको वेलावदर की बात बताऊं तो वेलावदर के अंदर जो रिसोर्ट है वो 22 रूम का है, और वो जो मैं उसकी भी थोड़ी स्ट्रेटेजी डिटेल में बताना चाहूंगा. हमारे 3 टाइप के स्ट्रक्चर है. 3 टाइप के स्ट्रक्चर में बोलूंगा. जैसे रिवर गंगा के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो टेंट है, उसको हम बोल सकते हैं टेंट सिटी और टेंटेड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द प्रवेग. करेक्ट. उसको डिसमेंटल करना है, लगाना है, तो वो टेम्पररी स्ट्रक्चर में ही सेट होता है. और इको टूरिज्म और इको वाली बात भी होती है जहाँ हम सीमेंट और स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते हैं. इट इज एग्जैक्टली ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा which is totally flooded in June, July, August सब month. So वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं, और उसका एक कॉस्टिंग नॉर्मली हमारा 15 से
18 लाख के बीच के अंदर हमारा पर रूम का रहता है. डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर चैलेंजेस ऑल्सो. समटाइम एकदम सी शोर पे है तो विंड प्रेशर ज्यादा होता है, तो थोड़ी विंड स्ट्रक्चर की कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है विंड के हिसाब से. ये जैसे रिवर गंगा में है तो उसका स्ट्रक्चर कॉस्ट, उसका जहाँ खड़ा करना है सारे स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए स्ट्रक्चर थोड़ा स्टील का कंपोनेंट ज्यादा यूज होता है बॉटम में. तो उसके हिसाब से सोचो तो 15 से 18-19 लाख तक हमारा टेंट सिटी का टेंट का स्ट्रक्चर है वो यूटिलाइज होता है. करेक्ट. दूसरी मैं बात बताऊं, जहां मेरे को लगता है कि टेंट की जगह दूसरा कोई कंपोजिशन ऐड करने से हमें को अच्छा बिजनेस भी मिलेगा और विंड और सारा प्रेशर और थोड़ा लुक आउट्स में फर्क दिखेगा, तो वहां हम टेंट नहीं करते हैं. वी यूज सेमी टेम्पररी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर component of seats, metal seats, components of cement seats, components of wood, like component we are using and making that resort. If you visit Daman, you get that idea also. So that cost is slightly higher. It's come to around 25 to 30 lakh rupees per room. And that per room include all infrastructure, surrounding infrastructure we need to develop for hospitality. So it is put to use kind of cost which we are incurring for this kind of. और उसका भी लॉजिक होता है कि जहाँ भी हमारे को लगता है कि हमारी ARR 8,000 से ऊपर जाएगी, corroborated with the cost of production, तो उसके हिसाब से हम एक डिसीजन लेते हैं. तो ARR जहाँ अच्छा मिलता है तो उसके लिए हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट 18 लाख की जगह 30 लाख तक करते हैं. तो वो एक दूसरी स्ट्रेटेजी है. तीसरी स्ट्रेटेजी है जो हमारी खुद की लैंड है, मतलब कि हम वी आर नॉट डूइंग इन सिटी काइंड ऑफ होटल which per room cost is 1.25 crore to 1.5 crore. Correct. We are doing in rural experiential places like Daman, Diu, Varanasi, like of you can see in Kutch of Kutch 2 property. All these are property is जहाँ हमारी खुद की प्रॉपर्टी, जहाँ लैंड हम परचेज करते हैं, वो लैंड के ऊपर जो करते हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन जो मॉड्यूल है वो हम परमानेंट सिविल स्ट्रक्चर का भी यूज करते हैं, क्योंकि वो रिसोर्ट ऐसा है कि 30 इयर्स 40 इयर्स चलाना है. वहाँ हमारी खुद की लैंड है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, तो उसकी कॉस्ट भी हम 40 लाख हमारा क्राइटेरिया रहता है, 40 लाख रुपया पर रूम. मैं आपको बोलूंगा कि 10% वेरिएशन प्लस माइनस आ सकते हैं. Till today whatever we done, it is within this range. So I can tell you that is around 40 lakh per room, for which we are doing this kind of infrastructure. But you have also to understood that where we put up 40 lakh rupees, we presuming our ARR 15,000, 20,000, 25,000 in Udaipur. We are making glass house, glass resort. The glass resort is on the cliff of mountain. So my guest is experienced there and stay in his room at night. If he open the curtain and all these hindrance to see the sky, he can see the sky open. Correct. So this is the unique proposition which Praveg are doing. If you visit Javai after some time, after fourth quarter, you will find there is a caves resort. Caves, जैसे मैं आपको हिंदी में बोलूँ तो गुफा, जैसे पहले मानवी वो जो स्टोन की गुफाओं में रहते थे, आपको ऐसा फील आता हुआ 22 रूम का आपको रिसोर्ट मिलेगा. That's high-end resort. That is the wildlife places where the wildlife lover of the worldwide come to see the leopard or come to see enjoy the tourist place of Udaipur, the place of tiger sanctuary of Ranthambore. Thereby we are using this kind of creativity, so our guests can feel the enjoyment by visiting our this kind of resort. So that type of creativity is always open to us, and our creative studio is our strength. Since last 25 years, we are doing hardcore advertising, exhibitions. So creativity in the blood of Praveg team. So that creativity we are using. Same way, Mr. Director Bhumit is also since last 6 months we have looking after entire construction and production kind of thing. So he's an experienced guy. So he's aligned with the creative team. So whatever creative team dreams, he tried to conclude within the parameters of the budget to finish the project at given time.
So that's a massive recruitment is done since last 6 months, and you can find this effect on this budget of the Q1 or some portion in Q2 because of indirect cost. We are not apportioning to the project. It goes always to the balance sheet, as you know, the prudent accounting policy. Correct. So somewhat overhead is increased, which is loaded in only one resort of 10 City Narda. That is the reason that we get a good EBITDA margin, but this Q1 result, you can get a below line profit is somewhat deviated due to that only. Even though our business is increased by 15%, but due to that indirect expenses कहाँ होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा. हमारा कॉल सेंटर अभी बना रहे हैं 15-20 रिसोर्ट्स खड़े करने जा रहे हैं. तो मेरे को कॉल सेंटर भी 5-7 लोगों का नहीं चलेगा, 25-30-40 लोग चाहिए. Correct. We are appointing that one of 5 times more people in our call center. हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ बढ़ेगा, हमारा HR स्टाफ बढ़ेगा. अदर देन प्रोजेक्ट एलोकेट करते हैं, उसके अलावा का भी बहुत खर्चे होते हैं. TADA होते हैं, विजिट के होते हैं. एक्विजिशन करना है तो 5 विजिट लगती है, वहाँ मिलना होता है, देखना होता है. तो सारे TADA वो हम डायरेक्टली कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं. Correct. All that expenditure is being loaded on Q1 and somewhat in Q2 because of Q2 there is a 3 resort now 4 resort is in operation. Okay. And 2 resorts from beginning of the second quarter, 2 resorts is mid of the quarter. So you can find good results based upon this overall scenario of our business Correct. atmosphere. मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताना चाहूँगा. Our dream is continuous journey in the tourism sector and the theme park sector. Where we can whereby we can do value addition in terms of some creativity, and we should be different from others. That is the key strategy of the Praveg. How we could be different than others. So हमारे जो next जो projects है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि that journey will be continue over the every year. So we have dream. अगर आपने से किसी ने Concall पहले देखा हो 4 महीने पहले, तो हमने 7 या 8 रिसोर्ट ड्रीम किए थे. But we have acquired, my strategic team of acquisition and all team division has acquired around 16 property right now. It is under development. 16 property. Okay. So out of 7 resorts, we at the end of March 24, you find 17 resorts in operation. Still, some thrilling results maybe come, and you will see on exchange notification also. That we are also doing efforts on that direction for Vision 27. Our Vision 27 is a 50 resorts across India to make experiential hospitality segment more vibrant for Indian tourism industry. और उसके लिए हमारा 50 रिसोर्ट में से 17 रिसोर्ट as against projection of 23 was 10 resorts. We will conclude in March is the 17 resort. Then you find next 9 months also some good acquisition whereby we can put another 10 resorts minimum. We are trying and doing hard efforts on that direction. It depends upon acquisition and various tenders and various proposals as well as from private strategic acquisition. But we are hopeful that we will conclude our 10 target next year also. So that journey will be continued. But you will happy to listen my one thing that after 17 resorts, our quarter-wise income will be streamlined because 17 resort will generate income, and whatever new development 10 resort or 15 resort overhead which is not being apportioned to that respective project will be even fall in the balance sheet. Even there will not be a problem to the Praveg. After Q3, the income will be enough to serve all these costs and all these costs to be incurred to finish our dream. So that 10 project journey is a normal decided journey. Whatever we are acquiring more or less, but at the end you find the 10 resorts per year. Praveg will continue this journey up to December 27. Then after some strategical
decision will be taken to lead this story further in an overall scenario, depending upon tourism response and experience. Correct. और मैं आपको और भी करना चाहूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जीबिशन, इवेंट मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग की बात नहीं है, वो तो बिजनेस हमारा कोर है ही है, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में हमने वो बिजनेस में फोकस इसीलिए नहीं किया है कि टोटल 17 रिसोर्ट करने के लिए जो भी एग्जीबिशन की भी टीम थी वो भी टीम काम में लगी हुई है हॉस्पिटैलिटी के। तो वी हैव ऑलवेज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, वहाँ से हमारे को एग्जीबिशन इवेंट्स में से 15 से 20% का मार्जिन होता है। ये इंडस्ट्रीज में 45-50%, 40% डिपेंड अपॉन ऑक्यूपेंसी रेशियो, वो मार्जिन होता है। सो वी वांट टू अचीव अवर दिस टारगेट एंड दिस ईयर आई एश्योर ऑल ऑफ माय इन्वेस्टर दैट माय टीम विल बी कैपेबल इनफ to carry out 17 resort next year. Even we get a new opportunity of another 17 resorts, my team will be very enough to cater all new 17 resorts development. So if this continue, if this journey will be continued and we get opportunity to cater that acquisition, in that case this journey will be continued because all team will be aligned with this year. We have made huge recruitment for them. Correct. Vasnubhai, excellent. You have given me excellent, I think, idea about your, the vision for 2027. Can I put, couple of more questions related to the same? Definitely. You can. So now the most important thing in this business, which I have seen, is, your food and beverages and your marketing strategy. How you are, what are you planning to do in terms of marketing that, like, say, I'm just trying to understand, supposing, people do tie up, with the, some large, the agencies who are doing this business, like, say, for example, Thomas Cook or somebody who may be having inward bound traffic also from foreign, etc., where this, kind of marketing may be required because they may not be aware what kind of these different experiences are available in India. Normally, they would go to a 5-star hotel only. So, what is the marketing ideas we are employing and some kind of a tie-up we are employing? And what is the arrangement in terms of food and beverages? Are you going to do on your own, or you have some catering services, etc., tied up with some renowned people whose tastes are very much sort of aligned with the tourist what they want normally. So, if you can just have a brief idea about that. Thank you. मैं आपको थोड़ा can you hear me? Haji, I can hear you. Yeah. Okay. I would like to give some focus on the background of the Praveg history. We are going to do we have done many Gujarat Travel Mart Expo in Gujarat. Since government of Gujarat want to promote the tourism industries, and that's why they have floated with that exhibitions across India. And it was the major event in Gujarat, where the highest team up to Chief Minister will take interest to develop the tourism. So that project we have carried out as an exhibitor, exhibition agency of the company. And we have already aligned since last 9 years I can say, that around 10,000 travel consultants is already our travel consultant for this hospitality business also. So they are aligned not for the exhibition, they also now continue a relationship with the Praveg. So my dedicated call center are taking inquiry from that 10,000 travel agent, number one. We have dedicated social media teams in my office who is handling various social media kind of campaign on paid or unpaid natural क्या बोलते हैं उसको ऑर्गेनिक बेसिस, तो वहाँ से भी हमारी इंक्वायरी जनरेट हो रही है. We have used a database of our own guests. They also giving inquiry to us. Apart from that, we have also digital media team which looking after online marketing from the guests. And as well as we also carried out call center database जहाँ पे हमारे को जहाँ भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं उसके जो डेटा के बेस से भी हम इंक्वायरी जनरेट करते हैं. तो ये कुल मिला के सारी जगह से हमारे को बिजनेस मिलता है. आपने जो बताया कि फॉरेन में कैंपेन करते हैं, इफ वी गेट अ रीजनेबल इन्वेंटरी, in that case we can tied up with international company also
to give business to us. Correct. So now right now the सारी दुनिया ऑनलाइन है, तो इंटरनेशनल गेस्ट भी बुक कर लेते हैं कहाँ से Correct. साइड से, तो वो है. फिर भी I would like to say this is a never ending exercise, and Correct. Praveg is doing on that direction. Correct. Now my special director IT is being appointed. He's an expert guy in San Francisco. He is now on the board of the company, operation of the company. So now that strategy will also be aligned with the international working style of the hospitality company too. Correct. I would like to focus on the food beverages team. Up to March 22-3, we have outsourced food and beverages team. Right now, we are appointed corporate chefs and entire team. All team are on the board of Praveg, on the team of the Praveg. So we have our own house food and beverages team. So now it's not outsourced. Correct. And whatever आपको बोला मैंने, हाँ जी, ARR, तो वो ARR में फूड कॉस्ट भी, फूड इनकम भी एवरेज आउट करके ही बोलता हूँ. Correct. Correct. So Vishnu bhai, normally what is the kind of the target you put when you are say incurring 15 to 18 lakhs and 25 to 30 lakhs and 40 lakhs kind of three models which you explain? What is your payback period which you envisage every time? Yeah, good question. I would like to say that my जो टेंडर, जहाँ मेरे को जो टेंडर आता है उसकी एक एनालिसिस होती है हमारी क्रिएटिव टीम की. हाँ जी. कि ये दरिया के क्लिप पे है, तो क्लिप पे मैं ज्यादा टेंट यूज नहीं कर पाऊंगा. करेक्ट. वहाँ मेरे को हमारी टीम डिसाइड करती है कि उसको सेमी टेम्पररी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है. तो वो जो काम है वो सारी जो पैटर्न्स है उसके हिसाब से हमारी कॉस्टिंग डिसाइड होती है. ये 3 मॉडल में से एक मॉडल है. करेक्ट. जो लीज हमारी 5 साल के लिए है, हालांकि वो रिन्यू करना होता है, रिन्यू हो जाती है, रिन्यू का सिस्टम है, तो रिन्यूएबल है. लेकिन 5 साल के लिए मिला है तो ऑब्वियसली माय कंपनी विल विश कि 5 साल में पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाए ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द प्रॉफिट मार्जिन. करेक्ट. दोनों को हिसाब से ही हमारी थीम बनती है कि वहाँ 15 लाख का 15 से 18 वाला डेंसिटी वाला स्ट्रक्चर में जाना है, 25 to 30 वाले में जाना है, 40 के हिसाब से जाना है. तो डिपेंड अपॉन लीज पीरियड ऑल्सो. करेक्ट. अगर 5 साल के तो नॉर्मली हम कॉस्ट कम करेंगे, एक्सेप्ट मेरे को वहाँ ARR एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है, वो दोनों को देखते हुए डिसाइड होता है. अच्छा. तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि फॉर टेंटेड अकोमोडेशन और ये जो टेम्पररी सेमी टेम्पररी का बात बोला, वो स्ट्रक्चर जहाँ भी यूज होता है, वी आर एज्यूमिंग और वी हैव सम कैलकुलेशन ऑफ द टूरिस्ट डेटा एज वेल एज अवर एक्सपीरियंस. तो उसके हिसाब से जितना कैपेक्स लगा है उतना कैपेक्स सेम साल में आ जाना चाहिए ग्रोस रिसीट के फॉर्म में. तो 1 year payback period targeting for a full amount of investment. It's not payback, sir. It's not payback. I would like to. I am a chartered accountant, so I would like to clarify this thing. This is not pay. This is not payback, but this is the formula which Praveg applying that gross receipt equal to capex. वो 1 साल से 1.5 ईयर मैक्सिमम आ जाना चाहिए. करेक्ट. जगह है तब हम बिल्ड करते हैं. राइट. आप समझिए बात को. राइट. I understood that cash payback should be within 12 to 18 months. 12 to 18 मंथ में पेबैक नहीं बोलता हूँ मैं, ग्रोस रिसीट बोलता हूँ. हाँ, ग्रोस रिसीट या फंड इन्फो. अगर आप इसमें 1 से 1.25 साल और ऐड कर लेंगे तो आपको पेबैक मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा 1.25 साल जाएगा ऑपरेशन कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट को निकालने में, मैन पावर कॉस्ट. तो मोटा मोटा 2.25 साल से 3 साल हमारा पेबैक रहता है. That's why our EBITDA margin you find higher. Okay. And this is unique model. That's why we are telling to our investor also. Correct. And this and आपको मैं और भी बताना चाहूँगा कि there is no any such a corporate company doing this kind of project. So we are not facing any competition to acquire strategic location. And wherever the local player competition in terms of tender or acquisition is there, whereby we are on strategic aid
because of we have good creative teams, we have good production teams, we have good marketing and promotion teams. So all this background is giving us added advantage and is to other competitors. अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक एक्स लोकेशन आया तो वो लोकेशन में अगर लोकल प्लेयर बीड करेगा तो उसका जो वायबिलिटी है उसका और मेरा वायबिलिटी में फर्क है ड्यू टू दिस एक्सपर्टाइज. तो उस वजह से हम थोड़ा ज्यादा रेंट देके भी हम उसको एक्वायर कर लेते हैं. करेक्ट. H1 को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, आप जानते हैं. तो हायर रेंट जिसको देता है तो हम थोड़ा हायर रेंट भर के भी जहां भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा लगे कि वेयर वी कैन रिकवर कैपेक्स इन 1 to 1.5 और इक्वल टू ग्रोस रिसीट, इतना रिसीट आएगा और वो रिसीट इतना कॉस्ट है, अगर वो मैच हो जाता है तो हम थोड़ा एग्रेसिव होके भी ले लेते हैं. करेक्ट. एंड वी आर नॉट फेसिंग एनी कंट्री वाइज प्लेयर लाइक प्रवेग. वी फेसिंग वेरी लिटल कंपटीशन, 1 or 2 टेंडर आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं. So that's a strategical move from the end of the Praveg senior team, which we apply on each resource acquisition. Correct. So Vishnu bhai, excellent, explanation. My final last question is that you said somewhere that by the end of this current year we will have about 800 rooms. Am I right? At the end of March, yeah, definitely. March we will have 800 rooms. But you have always to remove 216 room which is seasonal. No, I agree. So 800 rooms total inventory. As per your vision 27, where do you see by 26-27 number of rooms? I'm just asking. Number of rooms. What is your target internal? It's wild to exit. I do agree. Yeah. I agree. But just your whatever gut feeling is. I tell you. The thing is not only number of rooms. Haji. The thing is what is ARR of the rooms. Correct. Because number is a different thing, quality is different thing, and ARR is different thing. Absolutely. So even though ये 800 रूम हैं, इसके अंदर जो सर्टेन लोकेशन ऐसे हैं जो मैं बोलता हूँ 150-200 रूम्स के, जिसका लोकेशन ARR ये 8,000-9,000 वाला नहीं देगा, 12,000-13,000 वाला देगा, 14,000 वाला देगा. ओके. सो वो कितनी रूम्स एड्स होती है क्रिएटिव्स वाली, थीम पार्क वाली, मास वाली नहीं. करेक्ट. ये 10 CB नब्बा है वो मास है. करेक्ट. वाराणसी है वो मास है. करेक्ट. राम मंदिर है वहाँ मास आने वाला है, लेकिन राम मंदिर का हमारा स्ट्रेटेजी अलग है थोड़ा, तो हम अच्छा ARR ले पाएंगे. बट हालांकि मैं बोलता हूँ कि वो मास वाली की जगह जहाँ स्पेशलिटी लोकेशन है, सीसॉर है, देन आफ्टर क्लिप्स है, देन आफ्टर अंडर वाटर रूम्स कोई जगह पे बनाने का प्लान चल रहा है हमारा फ्यूचर में. ओके. वो अलग अलग लोकेशन का जो रूम्स है उसका ARR अगर आप 200 रूम 300 रूम करेंगे तो वो मास वाली 600 रूम जितना रेवेन्यू होगा. तो समझना पड़ेगा आपको. करेक्ट. वो कमेंट के साथ मैं मेरी बात करता हूँ. तो मोटा मैं आपको बताऊं कि 700 से 800 रूम जो बनने जा रही है. हाँ जी. तो नेक्स्ट दिसंबर में, मतलब दिसंबर 24 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मार्च 5 में, मार्च 25 में अगेन मैं 500 से आसपास 600 रूम ऐड कर पाऊंगा हर मार्च में. हर मार्च में ऐड कर पाऊंगा. 500 आप गिन सकते हैं, वाइल्ड आइडिया. ओके. मे वेरी डिपेंड्स अपॉन acquisition as well as opportunity. Correct. It may also increase. I can't say. But based upon presently हमारी जो acquisition की feedback आ रहा है, तो मेरे को लगता है 500 plus every March में ऐड करने का प्रयोजन है. So that gives me a picture about I would say that total I'm counting 800. It gives a total this thing maybe around 2,200 to 2,500 is the room which we may go to. 2 से 3,000 रूम के आसपास खड़े रहेंगे. और ARR भी 8,000 अभी ये जो 9,000 है लास्ट ईयर का हमारा 8,500-9,000 का है. आप रिपोर्ट में है, स्टडी करिएगा. तो उसको भी हम धीरे धीरे बढ़ाने जा रहे हैं. तो एक प्रपोजिशन ऐसा आएगा 8, 9, 10, 11, 12 दो तरफ से इनकम बढ़ेगी. एक तो ARR से बढ़ेगी, एवरेज जिसकी रेवेन्यू पहले नहीं थी वो अभी हम लेना चालू किए उससे बढ़ेगी,
और तीसरी बढ़ेगी, ऑक्यूपेंसी रेशियो भी बढ़ रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि कच्छ के अंदर हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2014 में, तो हमारा 30% ऑक्यूपेंसी रेशियो था, अभी 69% ऑक्यूपेंसी रेशियो है। केवड़िया 20-25% से स्टार्ट हुआ था, तो आज हमारा 40% पे पहुंच गया है। तो हर साल में 3-4% हमारा ऑक्यूपेंसी रेशियो बढ़ता है के हिसाब से थोड़ा, तो वो सारा कुल मिला के 10-15% का एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी में भी ग्रोथ मिलता है। Correct. Excellent, Vishnu bhai. Thank you very much for a very, very beautiful presentation and explanation. Thank you very much and all the best to you. Yeah, thank you, Nalin bhai. Thank you. We have our next question from the line of Ranudeep from MAS Capital. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity, sir. Any thoughts of expanding our network in Ladakh, especially in the backdrop that there's a big need and the present tents which are there are very substandard, especially the references towards Pangong Lake. Any thoughts around that, sir? We are keeping eyes open, and also I know whatever you say, Ladakh, Himachal, Uttarakhand, then after some part of Seven Sisters, Madhya Pradesh, महाराष्ट्र, मैं कहना चाहूँगा महाराष्ट्र में भी कुछ मूवमेंट है, तो उसके लिए भी एफर्ट चल रहे हैं। जो स्टेट टूरिज्म के हिसाब से अच्छे हैं उसको हम सब जगह पे हमारी आई लगा के बैठे हैं, और सम ऑफ न्यूज़ आपको कमिंग मंथ और ईयर्स में आ जाएगा आपके पास। Okay, sir. So my next question, sir. During COVID, sir, we saw many cities came up with this tents, to meet the additional requirement of hospital beds. Now, it's a little unrelated question, but just wanted to understand your opinion. Is there any thought of building these business models in case in future we have similar medical crisis hitting the country? Is there any thought from the management? No, sir. We are hardcore hospitality and event management advertising as a company. So, it's in part of exhibition event management domain. ये आपने जो बात बताई वो हम नहीं कर, अभी तो कोई थॉट ऐसा नहीं है कि वो लाइन को हम एक्सप्लोर करें, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि जिसमें गवर्नमेंट कम इमीडिएट रिक्वायरमेंट कि मेरे को 200-500 टेंट लगाने हैं और ऐसा कोई क्राइसिस है, तो Praveg can do set up infrastructure, proactively get the whatever the business receipt on that, but not on operation part of medical hospital. Only we can start चाबी ready करके दे सकते हैं within few days or within 1 month or days, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। वो मैं ऐसा एडवाइस करूँगा कि उसको हॉस्पिटैलिटी की जगह एग्जीबिशन के डोमेन में वो इनकम गिन सकते हैं, और ऐसा कोई काम आया 20-25-50 करोड़ का जो भी बड़ा, तो वो Praveg कर सकती है। इसमें हम तैयार हैं, और क्राइसिस इज अ ह्यूमन क्राइसिस। वो केस में Praveg विल ऑलवेज वर्क नॉट फॉर प्रॉफिट बट टू एग्जीक्यूट दिस टास्क ऑफ द गवर्नमेंट। सो ऐसी कोई आती है काम करने के कोई तक, तो Praveg इज रेडी ऑलवेज फॉर दैट। Great to know that, sir, because I think your strength is building these large-scale tent cities, and hence I thought, are we looking at that opportunity? That's good idea. Great. You have given me idea for that. Thank you, sir. In such a situation, government directly tell to us, because they know what the infrastructure these company purchase in Gujarat or Uttar Pradesh, even now Rajasthan or some days in Maharashtra. So गवर्नमेंट ऐसा कोई काम सडनली बोलती है जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड होता है, तो वो तो ऑलवेज वी आर रेडी फॉर दैट। तो वो तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी टीम है 50 लोगों की डेवलपमेंट की, 400 मिस्त्री लोग अलाइन है, 200 बिल्डर लोग अलाइन है कंपनी के साथ, 600-700 हज़ार लोग काम करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय। Sure. So my last question, sir, we are expanding rapidly in India, and very interestingly, we have chosen Africa as our next future growth opportunity with I think the notifications of Kenya and Tanzania you already shared. Wanted to understand, sir, why Africa? And what is the future forward in Africa, and what are the countries we are looking at? As you know, the tourism is everywhere.
हर एक कंट्री में हर एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट सिंस वी आर एक्सपीरियंशियल हॉस्पिटैलिटी कंपनी, तो हम ऐसा चाहेंगे कि थोड़ा हटके एक्सपीरियंस दे। तो जहाँ ताजमहल है, जहाँ यूरोप के हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उसकी जगह मैं थोड़ा पहले चूज करूंगा वाइल्ड लाइफ प्लेसेस को। और वाइल्ड लाइफ प्लेसेस में रेवेन्यू ARR अच्छा रहता है, जस्ट फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन। तो उसकी भी हमारी स्टडी रहती है। और मैं खुद पर्सनली जाता हूँ एवरी ईयर, एक्सेप्ट सम कोरोना पीरियड में नहीं गया हूँ, एवरी ईयर वहाँ सरंगेटी, केन्या, मसई मारा में जाता हूँ। तो मेरे को वहाँ अच्छा लगा कि ये काम करना चाहिए। सो वी हैव ओपन अप टू कंपनी, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो 15 दिन महीना चला जाता है फॉर्मेलिटी में। तो हमने स्टार्ट किया और वहाँ हमने एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी के साथ डिस्कशन भी है। तो एक एक्सपीरियंस भी लेना है प्रवेग को। जैसे कच्छ का एक्सपीरियंस हमने 2014 में से 18 तक लिया। उसके बाद हमने अच्छा लगा तो 18 में केवड़िया किया, और केवड़िया अच्छा लगा तो हमने ये जो मॉडल पे आगे लेबोरेटरी, मैं कई बार बोलता हूँ कि नाउ दिस मॉडल इज कम आउट फ्रॉम प्रवेग लेबोरेटरी एंड इट विल बी नाउ इन मासिस। तो जैसे आपको मैं जस्ट लाइटर टोन में कहता हूँ, कोरोना की वैक्सीन एक बार रिसर्च हो गई, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। तो नाउ प्रवेग इज केम आउट फ्रॉम दिस शॉर्ट प्रोसेस एंड नाउ इट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसोर्ट्स। तो उसके लिए काम करते हैं। तो सेम वाइल्ड लाइफ के बेसिस में भी मेरे को अच्छा लगता है कि वहाँ से बिजनेस मिलेगा। तो उसका भी एक एक्सपीरियंस 2-3 साल ओवरसीज का करे, तो उसके लिए सोचा है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट के अंदर मिल जाएगी तो एक आध छोटा प्रोजेक्ट करेंगे 2 जगह पे। तो ऐसा एक नजर थिंकिंग थॉट प्रोसेस था। इट्स अ थॉट प्रोसेस, आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस। इट्स नॉट एनी डिसीजन टेकन कि वहाँ ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बट it's a discussion with the authority and local people who give this kind of land available to us. तो उसके लिए हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर 27 वी नीड टू एक्सप्लोर मोर प्लेसेस, बिकॉज 50-60 प्लेस पे हम इंडिया में कर लेंगे। तो मेरे को लगता है कि दूसरी ओवरसीज अपॉर्चुनिटी भी फ्यूचर में देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा एक्सपीरियंस 2024 से 27 तक का हो ओवरसीज, तो मेरे को काम में आएगा वो एक्सपीरियंस। तो दैट वी एक्सपीरियंस फर्स्ट, वी अप्लाई फर्स्ट, we based upon experience, then only we put financial resources of the company into operation, because it's ultimately investor and my shareholder money. I am also shareholder like you, so there is no difference on that strategy. Sure. Thank you so much, sir, for all the elaborate answers, and wishing you all the best for the next quarter. Thank you. Thank you. We have our next question from the line of Mangesh Kulkarni from Almondz Global. Please go ahead. Sir, thank you for giving me an opportunity. सर, आपने बताया कि जैसे जैसे आपका ये एक्सपांशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होते जाएगा, वैसे देयर विल बी नॉर्मलाइजेशन इन द स्ट्रीमलाइनिंग इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट. सो as a percentage of your ARR, what will be the ballpark operating cost we are expecting when the streamlining comes? आपने बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन रेज किया। मैं उसमें थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूँगा। ऑपरेशन कॉस्ट ऑलवेज डिपेंड अपॉन ऑक्यूपेंसी रेशियो, राइट? हमारा जो एक्सपीरियंस है ऑपरेशन कॉस्ट का, तो उसके हिसाब से मैं बात करूं तो जितना ऑक्यूपेंसी रेशियो बढ़ता है, फॉर एग्जांपल कच्छ का 69% ऑक्यूपेंसी रेशियो है, यस, तो ऑब्वियसली इसका ईबिडा मार्जिन 50% एबव है। दैट्स व्हाई आई मीन आवर ऑपरेशन कॉस्ट इज 50 और बिलो 50, राइट? अगर हमारा ऑपरेशन ये जो ऑक्यूपेंसी रेशियो 40% है, तो हमारा ईबिडा मार्जिन एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं जा रहा है ऑक्यूपेंसी से, बट समवॉट 80% प्रोपोर्शन है। तो 40% ऑक्यूपेंसी रेशियो अगर नब्बे केवड़िया में मिलता है, तो और ईबिडा मार्जिन इज नियर बाय 40% ±5%. सो दैट इज आवर एक्सपीरियंस कि जितना ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा इतना रेशियो ईबिडा मार्जिन बढ़ेगा, राइट? एंड सर, ये अपना अभी हम लोग ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया था कि वी हैव लॉन्च द प्रावेग टीवी. सो व्हाई मींस डाइवर्सिफिकेशन इन अनरिलेटेड एक्टिविटी? सर,
it's a, I would like to elaborate on that line also. It's not a Praveg TV for only news channel. It's a tourism related news we want to serve. Informative news, informative information worldwide we want to share. We want to make this TV platform more for business people oriented TV channels, whereby we can put our advertisements, over because we are hardcore advertising company, earlier. So exhibition आते, advertising आते, real estate marketing company करती है प्रोजेक्ट की. तो हमारे पास अगर एक माध्यम है टीवी का, तो हम हमारे वो प्रोजेक्ट को ज्यादा हाईलाइट करके मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम न्यूज चैनल का रूल्स ऐसा 51% न्यूज दे सकते हैं, 49% हर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. सो वी आर मीटिंग दैट रिक्वायरमेंट ऑल्सो. तो हमारा एडवर्टाइजिंग कंपनी के हिसाब से ये सोच है. और दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा, द Praveg has done very fantastic job by applying their own skill. The cost of TV channel is not more than 5 crore rupees. Okay. Just for information, it's one kind of advertisement. Yes. डोमेन के लिए यूटिलाइज करेंगे हम. Right. तो आपको स्ट्रेटेजी भी देखने मिलेंगी 6 महीने बाद, आपको वो भी आपको देखने मिलेगा कि भाई ये टीवी का यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया कर रहे हो. Yes, sir. Because creative people, our creative people will give more ideas on that kind themes also. Right, sir. Sir, you have also mentioned about the adding a lot of professionals in the various domains, expertise. Yeah. But recently we have also mentioned about the resignation of your key ED and all these things. So what was the reason? She was, I think, heading the exhibition business, right? Yeah, sir, she was our employee of the company. And Okay. Recently we have been appointed as the director of the company. And always there is a opportunity and growth and सबका domain होता है. Right. Yes, sir. Sometimes some people are working exclusively. Sometimes some management or the things will expand rapidly. I need to expand my management and area of expertise rapidly. Sometimes people are not feel comfortable to leave some change of this kind of professional management system. Right. So we may have some kind of situation जिसमें मेरे को कंपनी का ग्रोथ को प्रायोरिटी में रखते हुए काम करना होता है. Right. So some other professional is already coming for the events and exhibition business. I would like to say about professional. Mr. Bhumit just added in last meeting was heading real estate sector since last 15 years. Okay. He is a civil engineer. He is now mastermind of Praveg. जो क्रिएटिव टीम ने जो डिसीजन लिया, जैसे कि दीव का बनाया, दमन का रिसोर्ट्स बनाया, आप एक बार विजिट करो आपको पता चलेगा. तो उसको उसकी टीम ने एग्जीक्यूट किया. आई नीड द वेरी सीनियर पीपल who can execute 17 resorts. It's not a small number, 15 resorts. Right. उनके लिए उनको हमने इसीलिए बोर्ड में लाए कि वो सारी सीनियर बंदा है और he is responsible to do the project within that cost and within the limit of the period of launching. तो मेरे को सीनियर बंदा डायरेक्टर पोजीशन पे लाए जो पहले ऑलरेडी काम कर रहा था कंपनी में. तो उनको रियल एस्टेट सेगमेंट से इधर में ट्रांसफर मतलब कंपनी के ये ज्यादा प्रोस्पेक्टिव कंपनी में उसका स्किल यूटिलाइज करने के लिए लाया. पहले क्रिएटिव टीम ही संभालती थी प्रोडक्शन. क्रिएटिव को सिर्फ विजन बनाने का थॉट प्रोसेस डिसाइड करने का काम है. आर्किटेक्ट्स हमारे क्रिएटिव टीम में है, स्ट्रक्चर क्रिएटिव टीम में है, सारी असिस्टेंट्स ऑफ आर्किटेक्ट्स लोग है. क्रिएटिव जो बनाते हैं कंप्यूटर्स को यूटिलाइज करते हुए वो लोग हैं. तो उसका डिवीजन अलग कर दिया, डेवलपमेंट का डिवीजन अलग कर, तभी मैं इतना डिलीवर कर पाऊंगा शेयरहोल्डर की एक्सपेक्टेशन. सेम वे डीजल परिक वर्किंग सिंस लास्ट 4 months with the Praveg to looking after account finance, management of finance, human resources activity. So she is now she is the director of UR Energy
CFO of your energy. Now she's looking after Praveg to take more her skill in the utilization of the Praveg this expansion strategy. तो उनको हम लाए जो 20 साल के एक्सपीरियंस है फाइनेंस अकाउंट्स और मैनेजमेंट का टॉप लेवल का CEO लेवल का. तो Bijal Parikh is also inducted. Again, two news are will come in the next meeting where IT directors and operation head will be appointed. So this kind of activity is we are management को expertise बनाना है. जो भी फील्ड है अलग अलग सब में एक्सपर्ट होने चाहिए, बोर्ड से रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए, प्रोफेशनली डिलीवर रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए. इस स्ट्रेटेजी को आगे हम ले जा रहे हैं सर. Very good strategy and all the best, sir. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to answer queries from all participants, please restrict your questions to 2 at a time. We'll take our next question from the line of Krupal Soni, an individual investor. Please go ahead. Hello, sir. Sir, I'm very grateful to be here. सर मुझे बस ये जानना था कि जैसे हमारी प्रॉपर्टीज मोस्टली रिवर बैंक या सी शोर पे लोकेटेड है, तो सर जैसे बिफोर जो है साइक्लोन हुआ था और तो उसमें इंश्योरेंस जो होता है तो उसमें जनरली सर नेचुरल कैलामिटीज या वैसे स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड, इनंडेशन वो इंक्लूड जनरली नहीं होता है. तो सर इस बात की प्रोविजन सर हमारे सारे रिसोर्ट इंश्योर्ड होते हैं इंक्लूडिंग साइक्लोन से लेके जो भी इंश्योरेंस बट सेम वे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स लोग वहाँ की विंड स्पीड को देखते हुए स्ट्रक्चर बनाते हैं. मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अभी आपके पास एक्सपीरियंस भी है. अभी जो साइक्लोन आया था दमन दीव में, प्रवेग की एक भी प्रॉपर्टी को एक का नुकसान नहीं हुआ है. जस्ट फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन. Fine. So it was the highest wind speed. You know that thing. Yes. So sir, in case of national calamity, अगर एक कोरोना आ गया तो इतने लोग चले गए तो certain चीज तो एक inherent risk business में है. As a prudent shareholder, you have to understand all company wherever you investing, that risk will always be carried. So I would not comment on that part. Yes, sure sir. मतलब नेचुरल तो नहीं, मैं मतलब वो कह रहा हूँ जैसे मैं एक्ट आउट वैसे बात कर रहा था, वो आई अंडरस्टूड. दूसरा सर ये मेरा क्वेश्चन था कि सर ये जो वेडिंग में हमने अभी एंटर किया है तो उस सेगमेंट पे हम भाई जो 5 स्टार होटल पे ओपन करने जा रहे हैं, तो उस सेगमेंट पे सर हम और आगे क्या मतलब और बैंक्वेट हॉल वगैरह का एक्विजिशन देखेंगे? यस, ऑलरेडी इट्स अंडर प्रोसेस. जो सिंधु भवन रोड की जो प्राइम प्रॉपर्टी है एग्जैक्टली एडजॉइनिंग टू द ताज, वहाँ हमने 3 बैंक्वेट में वेडिंग के हिसाब से जो प्लान किया है. तो ऐसी तरह अडालज के अंदर हम सेम स्टेपवेल बना रहे हैं. अडालज की जो स्टेपवेल है वही स्टाइल की दूसरी एक स्टेपवेल बना रहे हैं जो जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोशल एंड वेडिंग इवेंट्स वी कैन कैरी आउट. केवड़िया में भी पॉसिबल है. तो ऐसी तरह दमन के अंदर भी हमारी एक और स्ट्रेटेजिकल डिस्कशन चल रहे हैं दूसरी कोई जगह पे. तो वेडिंग का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आप जानते हैं. तो वो भी कैटर करना चाहेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग का. तो उसके लिए भी हमारी मेहनत चल रही है. आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ न्यूज एक्विजिशन के उसके हिसाब से मिलेंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. Thank you. We have our next question from the line of Dharmik Shah, an individual investor. Please go ahead. Yeah, hi, Vishnu bhai. This is Dharmik here, an individual investor. I have got a couple of questions. One is, if I see the last quarter results, I see the event and exhibition sales as 55% of the total, as in it is almost like 50-50. So just hearing the Concall where you said that this event management business gives only 15% EBITDA margins, while the hotels or you say hospitality business gives 45% margin. So we are focusing more on the hospitality side. So in the current financial year, what will be the mix? As in, if this is 50-50, so that's a good thing that you are focusing on a higher EBITDA side of business. So will it be like, as in, okay, will it be good to say that hospitality will contribute to like more than 60-70% of the total revenues next year? Dharmik, thank you for a question. मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इवेंट और कॉन्फ्रेंस और जो एग्जीबिशन इंडस्ट्रीज का टोटल रेवेन्यू है, उसका एक अपर लिमिट है काम करने का.
टीम की कैपेबिलिटी का। ऑलवेज प्रवेग मैक्सिमम जो काम किया है उसकी हिस्ट्री में वो 70 करोड़ का काम किया है ईयरली। एक पहले जब 2014 के पहले जब अर्ली इवेंट एग्जीबिशन का काम करती थी तो 60-70 करोड़ का प्रवेग में काम किया है। तो एक लिमिट है 70 करोड़ की, उससे ऊपर कंपनी गुजरात और गुजरात के सराउंडिंग एरिया में या दिल्ली में जहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैक्सिमम कैप तो वैसे भी लग गया है कि 60-70 करोड़ से ऊपर काम नहीं करेगी, नंबर 1। अब 60-70 को आप बाजू में रखते हुए जैसे आप देख रहे हैं 17 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर और 10 प्रोजेक्ट का विजन है हमारा, तो आप समझ सकते हैं कि वो नंबर एब्सोल्यूट नंबर इन टर्म्स ऑफ रुपीज में बढ़ेगा तो प्रोपोर्शन परसेंटेज तो वेरी होगा ही होगा। तो वी हैव आईज ऑन एग्जीबिशन एंड कंट्रोल दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग और रियल एस्टेट मार्केटिंग में हमारा नजर है, बट हमारा फोकस ड्यू टू ट्रेमेंडस ग्रोथ इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर परसेंटेज आपको कम डे बाय डे कम होते दिखेंगे, बट वी डू नॉट वांट टू लीव दैट डोमेन। वहाँ भी जो भी अच्छा काम मिलेगा, चाहे 20 करोड़ 25 करोड़ का काम कर सके, 10 करोड़ का कर सके, 50 करोड़ का काम कर सके, वो हम करेंगे। और हमारी टीम नेक्स्ट ईयर से थोड़ी फ्री भी होने वाली है क्योंकि हमने इसमें जो डेवलपमेंट टीम में, कंस्ट्रक्शन टीम में काफी डिप्लॉयमेंट कर दिया है, जैसे कि हमारी फिर से एग्जीबिशन टीम थोड़ी फ्री हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो नेक्स्ट ईयर से उसके ऊपर भी काम करेंगे। राइट। और सर एक ये कंसर्न है कि मैं बीएससी की वेबसाइट में जब हम देखते हैं तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग हैज कम डाउन फ्रॉम 74% टू 57%। सो प्रमोटर का होल्डिंग नीचे क्यों आ रहा है? हाँ, आपने शायद वेबसाइट देखा है, डिटेलिंग नहीं देखा है, ऐसा लग रहा है धार्मिक भाई। 74% में जो प्रमोटर थे वो प्रवेग कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के 4 लोग दूसरे भी थे, अपार्ट फ्रॉम पारस भाई एंड विष्णु भाई। डॉक्टर राजेश भाई इज ऑल्सो वो भी थे और डॉक्टर जयेश भाई करके थे जो प्राइवेट लिमिटेड वक्त से हमारे साथ वो पार्टनर्स है, तो उसको भी शेयर स्वैपिंग में मिला गया था जब मर्जर किया गया। तो वो जो 9% होल्ड करते थे उसको हमने डिक्लासीफाई कर दिया है, नॉट एज अ प्रमोटर। तो 63 to 64% वैसे भी हो गया। उसके बाद हमने 2 प्रेफरेंशियल किए, 2 प्रेफरेंशियल में प्रमोटर ने भी 40% पार्टिसिपेशन किया पहले 2 प्रेफरेंशियल में, और बाकी का जो प्रेफरेंशियल में पार्टिसिपेशन है वो प्रमोटर्स के नजदीक के ग्रुप का है जो दूसरे बिजनेस में साथ है। तो ऐसे तो ऑब्वियसली वो पब्लिक है, प्रमोटर्स नहीं है, तो वो अलॉटमेंट की वजह से प्रोपोर्शनेटली डिसप्रोपोर्शन थोड़ा रिडक्शन आपको देखने मिलेगा। दैट मूव ऑनली। हाँ, सब ओके, आपने डिक्लासिफाई किया है, ओके, दैट्स गॉट इट। और सर ये आप जब ये नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो तो उसका कॉस्ट आप कैसे ऐड करते हो, मतलब पीएनएल शीट में एमोटाइज होता है कोई भी एक नए प्रोजेक्ट का कॉस्ट कि फिर एक ही क्वार्टर में उसका कॉस्ट? गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दीव का हमने काम शुरू किया, तो जब से काम शुरू करते हैं तब तक पूरा हो, जब तक पुट टू यूज हो, तब तक की वहाँ की टीम, वहाँ की कॉस्ट सारी कैपिटलाइज होती है। अगर वो फॉर एग्जांपल ये जो साइट रेडी हो गई और रेडी होने वाली है, उसके 2 महीने पहले हमारी अपॉइंटमेंट होती है, जीएम ऑपरेशन, वहाँ के जीएम, वहाँ का मैनेजर्स, वहाँ के स्टाफ, वो सारी जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, डायरेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो रिसोर्स की वो सारी सैलरी कॉस्ट वहाँ कैपिटलाइज होती है। इधर की अहमदाबाद की जो प्रोडक्शन टीम है, वो जो इसमें से 2 लोग वहाँ काम करने गए हैं, इंजीनियर्स लोग, उसके और उसके टीएडीए सारे एमोटाइज होते हैं। जो नहीं होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में, जो बैलेंस शीट में पड़ते हैं, वो वही कंसर्न है, मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कि तो वो जो कॉस्ट है अदर देन डायरेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैन पावर कॉस्ट, डायरेक्ट प्रोडक्शन टीम कॉस्ट, उसके अलावा की जो कॉस्ट है वो है हमारी कॉल सेंटर बढ़ाया है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ बढ़ाया है, एचआर स्टाफ बढ़ाया है, टेंडर टीम बढ़ रही है, सीनियर मैनेजमेंट, ऑपरेशन हेड, आईटी हेड, फाइनेंस अकाउंट हेड, एचआर हेड, सब जो भी हेड ऐड हो रहे हैं, कॉर्पोरेट जीएम ऐड हो रहे हैं, जो ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट्स के लिए है, जिसका कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, वो कॉस्ट हमारी बैलेंस शीट में जाती है। दैट इज द रीजन कि ओवरहेड आपको शुरुआत में आपको मिलेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ईयर।
कि जिसमें मैनेजमेंट से लेके सारी एबिलिटी और कैपेसिटी प्रवेग की 15-20 रिसोर्स करने की बढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट जाएगी, डायरेक्ट कैपिटलाइज होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको देखने मिलेगी जो क्रोर्स में है, तो वो कॉस्ट हिट करती है, जो आपको पहले दूसरे क्वार्टर में थोड़ा बहुत, पहले में ज्यादा हिट करेगी क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट था इनकम वाला, दूसरे में कम हिट करेगी क्योंकि 4 प्रोजेक्ट है, तीसरे में बहुत कम होगी करेगी 10 प्रोजेक्ट है, चौथा में 17 रिसोर्स है तो 17 प्रोजेक्ट अपने खुद के खर्चे अपने अपने हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बोन कर लेंगे। तो वो सारी मैटर आपको समझनी पड़ेगी बिफोर अंडरस्टैंडिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर सो दैट वाज द रीजन ये क्वार्टर में आपका देखा था। और आई थिंक बाकी ARR का मेरा क्वेश्चन था, लेकिन दैट इज ऑलरेडी बीन आंसर्ड। Yeah, Dharmik, thank you for your interest. Thanks for your time, sir. Thank you. We have our next question from the line of Avinash, an individual investor. Please go ahead. विष्णु भाई, 2 क्वेश्चन है। अभी आपकी जो 17 प्रॉपर्टीज है, इसमें जो सीजनल प्रॉपर्टीज है वो वर्सोवा और आपका ये रणी रहेगा ना, बाकी सब प्रॉपर्टीज विल ऑपरेट ऑल थ्रू आउट द ईयर ना, एम आई राइट? सर वर्सोवा नहीं, वर्सोवा कहाँ चला है? वाराणसी और कच्छ 2 है। तो यही 2 प्रॉपर्टीज, बाकी सारी प्रॉपर्टीज विल ऑपरेट अगले साल से होपफुली फ्रॉम FY25। इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है कच्छ के बाजू में। Sorry sir, you're not audible. Can you come closer to the microphone? Yeah, in fact, madam, I just wanted to, विष्णु भाई, मेरे को एक ही बात पूछना था कि FY25 में हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि पहला और सेकंड क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग रहेगा क्योंकि आपकी सारी प्रॉपर्टीज विल बी ऑपरेशनल, एम आई राइट? डेफिनेटली यस। बट मैं आपको पहले आपको ट्रेंड बता दूं, मैं उसका जवाब डेफिनेटली यस है, बट उसके सामने मैं थोड़ा सेगमेंट वाइज बात करूं कि नॉर्मली सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर एंटायर टूरिज्म इंडस्ट्री में वीक होता है। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ टूरिस्ट लोग मॉनसून में नहीं निकलते। बाद दिसंबर इज गुड सीजन, हार्श सीजन नहीं होती, टेम्परेचर अच्छा होता है, विंटर होता है, मार्च तक विंटर अच्छा सीजन होता है, तो सब लोग घूमना चाहते हैं। लेकिन मैं इसमें भी बताऊं कि दमन और दीव की प्रॉपर्टी फिर क्वार्टर 1 में ज्यादा परफॉर्म करेंगी, 4 प्रॉपर्टी, बिकॉज दमन दीव में सब लोग दरिया में समंदर में नहाने के लिए बहुत पब्लिक जाती है फर्स्ट क्वार्टर में, तो उसका थोड़ा कंपेंसेशन मिलेगा। तो व्हाट कंपेंसेटरी इफेक्ट ओवरऑल लीड टू प्रवेग रेवेन्यू, दैट वी हैव टू सी, बट डेफिनेटली यस, बिकॉज ऑफ दिस क्वार्टर विल नॉट बी कंपेरेबल विद द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर। नहीं, ठीक है। और विष्णु भाई, एक फाइनल क्वेश्चन, अभी आपने बोला कि आपने 2 प्रेफरेंशियल इशू किए हैं, तो अभी कंपनी का कैश फ्लो भी मैं समझता हूँ 17 प्रॉपर्टीज चालू हो जाएंगी तो कैश फ्लो भी आपका ऑन इट्स ओन विल बी सिग्निफिकेंट। तो आगे चल के कैन वी ऑल एज्यूम दैट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आल्सो विल फंड योर फ्यूचर एक्सपेंशन? इसके बारे में अगर आप कुछ बोले। यस। जैसो मार्च 25 में पूरी इफेक्ट आएगी 17-15 प्रोजेक्ट की बिजनेस में। Anyway, that will partly fund. Yeah, thank you and all the best. Yeah. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I now hand the conference over to Mr. Gopal Chandak from Kirin Advisors for closing comments. Over to you. Thanks everyone for joining the conference call of Praveg Limited. If you have any query, you can write at research@kirinadvisors.com. Once more, thank you everyone for joining the conference. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.